तो क्वेश्चन नंबर 201। तो हमें इसमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो। तो सबसे पहले हम करें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू है हमारे पास 25,20,000 and 19,20,000 cost of revenue. हो जाएगा 6 लाख ग्रॉस प्रॉफिट। यानी 6 लाख ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 25,20,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। 23.81%। सेकेंड है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। So cost of revenue हमारे पास 19,20,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 2,40,000 डिवाइडेड बाय 25,20,000। So 19,20,000 plus 2,40,000 divided by 25,20,000, 85.71। So net profit ratio is net profit upon revenue from operations into 100। अब देखो हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव और माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 6 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 2,40,000 और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है
नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है और ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं है। 3,60,000. So 3,60,000 divided by 25,20,000. 14.29. इसके हम करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 19,20,000 divided by average inventory 8 lakh. 2.4 times. इसके बाद है करेंट रेशियो। तो करंट रेशियो इक्वल्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। देखो करंट एसेट्स इक्वल्स नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट। तो नेटवर्थ हमें दिया है 15 लाख प्लस 9 लाख प्लस 6 lakhs minus 14,40,000. 15,60,000 divided by 6 lakh. 2.6 is to 1. So question number 202. Calculate operating profit ratio and operating ratio from the following. तो सबसे पहले हम इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जैसे कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू माइनस सेल्स रिटर्न। कैश रेवेन्यू है 2 लाख प्लस क्रेडिट रेवेन्यू 1,30,000 माइनस 10,000 सेल्स रिटर्न। 3,20,000। ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1,80,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
Office and administrative expenses 40,000. Selling expenses 36,000. So 76,000. हमें क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो equals operating profit divided by revenue from operations into 100. तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो रेवेन्यू है हमारे पास 3,20,000. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 1,80,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 76,000. So operating profit is 64,000. So 64,000 divided by 3,20,000 into 100. 20%. अब हमें चाहिए ऑपरेटिंग रेशियो. Operating ratio is cost of revenue from operations plus operating expense divided by revenue. Into 100. The cost of revenue is 1,80,000 plus 76,000 divided by 3,20,000. 80%. Question number 203. Calculate operating profit ratio and operating ratio. See, operating profit ratio equals operating profit divided by revenue. Operating profit हम कैसे निकालेंगे? Revenue from operations 4 lakh minus cost of revenue 2,50,000 minus operating expenses 90,000 divided by 4 lakh into 100. 60,000 divided by 4 lakh into 100. 15%. अब हम करेंगे ऑपरेटिंग रेशो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस divided by revenue. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमें दिया 2,50,000 प्लस 90,000
divided by 4 lakh. 85%. Operating profit ratio equals operating profit divided by revenue from operations. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 1,20,000. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45,000. 75,000 divided by 3 lakh. 25%. Operating ratio is cost of revenues plus operating expenses तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है हमारे पास रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. रेवेन्यू है 3 लाख. ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000. 1,80,000 plus operating expenses 45,000 divided by revenue 3 lakh. 100. 75%. Operating profit ratio equals यदि ऑपरेटिंग रेशियो दिया है 78%, तो 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो. 1 minus 0.78 plus 0.22 or 23%.